Good morning, students. Welcome to Commerce Campus Odisha. Today we'll start with goods and service tax, that is GST. GST is easy na difficult? Easy na difficult? Medium? 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 Okay, fine. So what is GST? ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଅଲି କହିବା ଉପରେ what is GST? Goods and service tax. Now good night and sweet dreams. So that GST है obviously. Good night, sweet dreams. Take care. अच्छा हाँ. Okay. Amendment ही जिसमें ଏବେ fine. तो GST माने not good night, sweet dreams. Take care. GST means goods and service tax. तो हमें clearly देखी पा चुकी the tax which is imposed on provision of goods or services is known as GST. Okay. तो first हम देखिए direct tax versus indirect tax. मतलब को किया direct tax रे side ना को किया indirect tax रे side ना. ए बप्पा सर डाकिया कि ना ना सेमती नहीं मु जीएसटी रे साइड डीटी रे साइड के समान सब डीटी रे साइड भलो हो मु जीएसटी रे साइड तुम कॉस्टिंग नहीं डीटी माने साइड डीटी वर्सेस आईडीटी मते को डीटी रो डायरेक्ट टैक्स छाड़ो डायरेक्ट टैक्स माने कोन डायरेक्टली ऑन द tax payer, the tax which is tax levied on the taxpayer directly, it is direct taxes. Indirect माने कोन on the end consumer, consumer ऊपर रहिबो कोन indirect tax. एडा कोन income generation ऊपर एडा consumption ऊपर. All these are for your bit questions. तमे जानि छो DT IDT is 50-50 not biscuit 50-50 marks हैला. So if you prepare good, तमे selective study करी पारछो, तो you will easily get exemption in this subject. बुझी पाला? तो एजा सब होचे हमर बिट क्वेश्चन पर्पस पे नले तो नॉर्मली 2 मार्क्स क्वेश्चन भी से पचार परियो मजा मजा रे गुटे रिफ्रेशमेंट पे पचार दो मजा मजा रे क्वेश्चन पचार दो डायरेक्ट टैक्स जहा भी होची सेडा कोन the basis of this taxation is on the income generation. तमे जते income generate करलो ता ऊपरे सेति की proportionately tax पड़िबो, that is direct taxation. But indirect taxation माने कोन जोडा तमे consume करिलो consumption माने कोन not खाया consumption माने using okay कोन not खाइबा direct tax shifting of tax burden is not possible, but indirect taxes can be shifted to others, that is seller to buyer. Obviously tax jaha bhi achi seguda ko share hochi. We will study it in the chapter of ITC, input tax credit. Sethira ame padhiba kono ki seller और buyer मध्ये proportionately tax टा केमिति proportionately save होची किंबा transfer होची. But direct tax रे कोन ही परियो कि तमे income करियो आउ कि तम पे tax बांध हबो कि केबे obviously नहीं. Then direct tax is progressive in nature. Eta टिके important. Okay, direct tax is always progressive in nature. More income, more tax. But eta regressive. Same rate for the rich and poor. तो मते कोएबे GST भलो ना DT भलो? कोडा भलो? GST भलो. कोडा भलो नै? कोडा रे कोन जल्दी कोन के फायदा पुडो दे दे. दबो न की दबो. कोडा ले पैसा दबा पड़ियो. तापरे डायरेक्ट टैक्स रे एग्जांपल होची इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा. डायरेक्ट टैक्स रे की एडमिनिस्टर करची, दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आसी 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुची. डायरेक्ट टैक्स इज हेडेड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस रो हेड के करची सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. Central Board of Indirect Tax and Custom. They can ask in the abbreviation format or in the administrative body specify करो. से type of question मध्य आसी परिबो. ये जोड़ी द फाइनेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कोडा जोड़ी अच्छा ए दीडा जगह माने देखो ए दीडा जहां भी अछि दैट विल कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्लियामेंट. असडा को अंडर रे गले गला बुझी पाला ना. एडा होची डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी माने ए डायरेक्ट टैक्सेस को कोडा एडमिनिस्टर करछि, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोडा डायरेक्टली एडमिनिस्टर करछि. सेउडा को सब क्लासिफिकेशन अंडर अगेन पार्लियामेंट अंडर रे जाउछि ना. बुझिबो एबे पढिबो जीएसटी केते प्रकार अछि, को प्रकार जीएसटी मध्ये से डिवाइड हेगी अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आगे जीवो.
तो सेमिति features of indirect taxation. Major revenue source for government, over 50% of total tax revenue, regressive in nature, same tax rate for all income groups, inflationary, increases prices of goods or services, levied on goods and services at manufacture, sale or provision stage, shifting of burden, seller collects from the buyer, higher tax base promotes welfare. ठीक है, देखो को पॉइंट न बुझले बुझेबी. मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट, मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट कहीं से कौन देखो 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू अगर तार मेजर सोर्स तापरे रिग्रेसिव इन नेचर कौन पे सेम टैक्स रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स समस्त पे गोटा टैक्स रेट आम देखु एडी. नेक्स्ट इनफ्लेशनरी, इनफ्लेशनरी माने जिंदी जिंदी प्राइस गुड्स रो सर्विसेस रो प्राइस बढ़ी बढ़ी जाउथियो ए टैक्स रेट मध्य बढ़ी बढ़ी की जाउथिबो. तुमको फीचर्स जदि पचारिबो से एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू पॉइंट कयो, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग इनफ्लेशनरी कौन, रिग्रेसिव कौन, वेलफेयर कौन सिंधी पचारिबो. तुम ओवरऑल पचारिबोनी तो गोटे गोटे पॉइंट बुझिया दरकार. देन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, सेलर कलेक्ट्स फ्रॉम द बायर, हायर टैक्स बेस, covers most goods or services with few exemption, promotes welfare, higher tax on sin goods like liquor, tobacco. sin goods को चंदे एडा कहेंगे पाप लगे खाया लोक ऑब्वियसली बिकला लोक तो धनी ही थी ताको इतने धनी पैसा ही पैसा मुझे पालो ना नहीं. Evolution of GST in India देखो. This is for your bit question purpose. Year 2000 रे के जन्म होइतिला के भी नहीं नहीं से कुआडे जन्म होइति मिसी नगे इन कि हम मिसी पई पड़छ मु बच्चा से को छेला आंसर 2000 ईयर रे कोन हला प्राइम मिनिस्टर प्रपोज ए तुमने पिट्टी दे दोछ प्रपोज जीएसटी कमिटी सेटअप को ईयर रे 2003 रे कोन हला टास्क फोर्स रेकमेंडेड इंटीग्रेटेड जीएसटी माने सब डिस्कशंस रे को ईयर रे कोन हला तापरे एफएम माने फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम announced GST to be implemented from 1st April 2010. 2015 6th May रे कोन हला लोकसभा पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. लोकसभा रे केबे पास हला बिल रिलेटेड टू जीएसटी. ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपोर्टेंट. कोडा तुमको देखो बिट क्वेश्चन बहुत जिनसर से पचारि पारे बट से जान जाने ए क्वेश्चन आ पचारियो काहेकि एडर अधिक पिला भूल करिवे का मन रही जा सब. तो बिल रिलेटेड टू जीएसटी, bill related to GST passed in Lok Sabha in the year 2015 6th May. एटा एमटीपी रे देछि क्वेश्चन टा. ओके bill related to GST passed in Lok Sabha in the year 2015 and the date is 6th May. सेट पे मु डेट जा देछि. राज्य सभा रे केबे पास हैला 2016 अगस्त 3. then President gave assent माने 101st Constitutional Amendment Act रे कोन कले President assent देले माने he has given his consent or he has given his will to accept. 2016 8th September. then 2017 27 March रे कोन हला CGST IGST UTGST compensation bill सब जगह introduce हला. again ए उडा को केबे आउथरे assent देले President ना 2017 12th April रे देले. फाइनली जीएसटी केबे इंप्लीमेंट हला इंडिया रे 1st July 2017 रे जीएसटी रा हैप्पी बर्थडे हला कोन जम्मू कश्मीर एबे जे जानना जेएनके कोन सादा ने माने नॉर्मल जिंस सादा पुलाव तांकर ओडिया माने बहुत एक्सट्रीमली तम ओडिया ठीक अछि आम बुझिबारे प्रॉब्लम अछि. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू केजन ओडिया तो ओडिया पूर्ण ओडिया कोन
चाट ना पानी पूरी कूड रोले बच्चा कौन कौन जोर से मत अधा सुपिला कौन लाज पड़छ ना कौन हाँ कुछ से कुछ लाज पड़छला हाँ लिख तो तेलुगु बुझी ओ तू हिंदी कही न थु जे छाड़ लेखिलो एडा आउ थे आज ले कोई मॉल करे लेख कही से पिले लेखुची तमन काई लेखना काई लेखुना से कौन तो लेखक थिला को गोटे पॉइंट लेखिला मु देखली कोन मिलियो कोन धीर लेखुना एबे चार्ट जोड़ा हबो सेटा किछि एथरे इंक्लूडेड नै सुनियो खुशी लागियो मते नोट पेन न काढी के सुनले बड़ राग लागियो बुक कथा नै बुक रे किछि नै मु जोड़ा जोड़ा हाइलाइट करछि खाली से जगह अलग रे लिखिबो discuss the concept and features of indirect tax was asked for 7 marks केबे पचारछि जानचो तो ईयर रे 2023 डिसेंबर 7 मार्क्स क्वेश्चन माने तुम लागियो एबे एबे पिला ने एडा इग्नोर करिकि पळैथिए ना आओ फीचर्स एली कहले आओ मैनेजमेंट रो फीचर्स ओडा डाबा मारले हबोनी इनडायरेक्ट टैक्सेस रो जोडा अछि सेडा लिखियो पड़ियो सेति पे से 7 मार्क पचारछि discuss the concept features and concept of indirect taxes indirect taxes discuss the features and concept of indirect taxes first होची tax on goods and हाँ कौन बोचो कोडा फीचर जो आगे डिस्कस करथिलो हाँ मु कहूच पा tax on goods and services tax on goods and services burden shifted from buyer to seller burden shifted from buyer to seller increases with respect to inflation promotes social welfare एडा बहुत भलो पॉइंट है प्रमोट सोशल वेलफेयर by checking एडा तुमरो इंस्टीट्यूट रो आंसर टा दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अलोंग साइड ताकि तमे कंपेयर करि परियो प्रमोट सोशल वेलफेयर by checking the consumption of sin goods through higher tax rate through higher tax rate majority of goods and services are liable to GST are
liable to GST with very low threshold limit, with very low threshold limit, with very low threshold limit, making the scope wider than direct tax, making the scope wider than direct tax. ମାନେ ଥିବ बट जीएसटी रो देख इनकम टैक्स रो एमिति अछि कि टैक्सेशन इवेड बहुत अधिक होउथिबो इन डायरेक्ट टैक्स रे बट जीएसटी रे सेमति नै टैक्स इवेजन पर्सपेक्टिव ता नै तो देख इनकम हम जतळ कैलकुलेट करछु वी हैव टू पर्सपेक्टिव्स कि आमे जान दउ छ एप्रोक्सीमेटली कि डायरेक्ट टैक्स रे ताक सेति कि रिसीव होछि इनडायरेक्ट टैक्स रे को एति कि रिसीव होछि कहि बट टैक्स इवेजन जो पर्सपेक्टिव अछि सेडा होछि रियलिटी केजन टैक्स इवेड करि पाछन डायरेक्ट टैक्स रे अधिक लोक टैक्स इवेजन करछन जेते भी कहि दियो टैक्स सेविंग बहुत लोग करछन टैक्स इवेडिंग करछन टैक्स सेविंग इज ओके बट जीएसटी रे सेडा पॉसिबल नै काहेकि एते जाको यूजर्स रे से जिंसडा शिफ्ट हे जा पडलो परे बे बर्डन शिफ्टेड तो से जिंसडा के माने अवॉइड करि परियन बिकॉज़ इट इज डिवाइडेड अमंग अ लॉट ऑफ पीपल जणा पाखरे थिले से कोन ले करिवो इट्स मैंडेटरी कोन इनकम टैक्स एक्चुअली तापरे रिग्रेसिव इन नेचर माने कोन एटार 2 मार्क्स क्वेश्चन मध्ये देछि सिए माने एक्सप्लेन व्हाई जीएसटी इज रिग्रेसिव इन नेचर कहिगिरी कोंडा नाही रिग्रेसिव रो मीनिंग सेटा नाही लेखो मो लेखोच indirect tax does not create indirect tax does not create any difference between rich and poor rich and poor in fact एटा 2 मार्क्स क्वेश्चन पे मु लिखि दोची एडियागा in fact poor people in fact poor people poor people in fact poor people are required to pay poor people are required to pay poor people are required to pay equal percentage of tax on certain goods on certain goods and services on certain goods and services of mass consumption which may increase the disparities between rich and poor
से आउट पॉइंट कोन देइछ लास्ट पॉइंट नो पिंच नो पिंच seller does not perceive a direct pinch as the tax is recovered by him from the buyer and paid to government since it is inbuilt in the price the buyer shall pay it without actually realizing that he is paying without actually realizing that he is paying. 2024 December मध्ये सेम क्वेश्चन पचारछि 7 मार्क्स में एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्वेश्चन नथला हम तो कोन कोच ओके हला रिपीटेड क्वेश्चन तो पचारे चांसेस अछि मे भी 7 मार्क्स पे नथले 3 4 मार्क्स पे तो पचारियो जो क्वेश्चंस एग्जाम रे आछि आई एम मेकिंग यू राइट रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल होछि तमरो एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करे रहइबो सेकंड होछि राइटिंग प्रैक्टिस जोडा निजे लिखिबो सेडा मन रहि जिवो ऑटोमेटिकली एबे ए पॉइंट उडा रे टिके टिके जिंस तो तमे इमितरे मन रहि छि ओके नेक्स्ट देखो नीड फॉर जीएसटी that is need for GST removes the deficiency of earlier VAT system avoids cascading of taxes uniform tax laws integrates VAT and service tax allows ITC to all manufacturers service providers and retailers simplifies interstate trade CST credit not available earlier hala तो एटा होची कोन नीड फॉर जीएसटी माने आगरे कोन होतिला VAT सिस्टम जोड़ा थिला VAT माने वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जोड़ा थिला सेथरे बहुत किछि जिंस कमी रहि थिला जोड़ा कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कला तापरे अवॉइड्स कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस माने कोन ड्यूअल टैक्सेशन जो सिस्टम डा थिला सेडा अवॉइड हला देन यूनिफॉर्म टैक्स लॉस अक्रॉस स्टेट्स माने गुटे स्टेट रे गुटे टैक्स सेमति किछि नै सब स्टेट रे गुटे आइटम पे गुटे आगे टैक्स रेट यूनिफाइड टैक्स सिस्टम ऑन ऑल स्टेट्स तेमति हेले कोन को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हबो एंड के अधिक प्रॉफिट के कम प्रॉफिट सेमति किछि हबो इंटीग्रेट्स व्हाट एंड सर्विस टैक्स माने जीएसटी जो होइछि इट्स एन इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम कोन पे कोआ होछि ना बिकॉज़ बहुत प्रकार रे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स रो से किछि किछि जिंस इनकॉर्पोरेट करिकि तार निजरो गुटे इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम डा करछि तो मेजरली तीन जिंस से कंसीडर करछि दैट इज व्हाट एंड सर्विस टैक्स allows input tax credit to all manufacturers service providers and retailers simplifies interstate trade माने दीडा स्टेट भितरे जहा भी ट्रेड एक्टिविटी हबो बिजनेस एक्टिविटी हबो से जिंस को के सिंपल करछि जीएसटी सिंपलीफाई करछि बुझिला Question देखो 2024 June 7 marks question. State the
state the difficulties, state the difficulties or limitations, state the difficulties or limitations in pre-GST regime, pre-GST regime in context of, in context of indirect taxes, in context of indirect taxes which were removed, which were removed with introduction of GST. Removed with introduction of GST. Go, answer. ମାନେ ଆଗରେ difficulty କ'ଣ ଥିଲା? Very good, number 1 point ସେଟାକା ଥିଲା. In pre-GST regime, Indian indirect tax was highly fragmented. तो keywords जोड़ा मु लेखुची tax रे very important. Law जेमिति, audit जेमिति, tax माने तीनटा जा जिंस completely different. Law रे कौन होची provision टा बुझी कि तमे crisp item लेखि पारिबो सेडी. Audit रे कौन होची keywords किछि किछि जागा रे matter करची और किछि किछि जागा रे format थाउची. But GST रे कौन होची जोटी जो word दरकार सेडा लेखियो बाध्य. Okay, the first रे लेखो in pre-GST regime, in pre-GST regime indirect tax was highly fragmented, was highly fragmented since there were many taxes, like कौन थिला अगर GST अगर excise duty, service tax, VAT, CST, purchase tax, entertainment tax, octroi, etc. मो अलगरे तुमको लेखी भी किमा अच्छी आई थिंक कि GST अंडर रे कोको टैक्स सिस्टम गुडा को कोको टैक्स सब्ज्यूम हेज माने मर्ज हेज. फर्स्ट पॉइंट. देन अरे डिफिकल्टी कोन पचाच से केबेले एडवांटेज पचारियानी भूल रे पचारियानी मु कहली ना डिफिकल्टीज कोन थिला. हां हां ओके स्टेट टू स्टेट. हां नेक्स्ट हो जे सेडा स्टेट टू स्टेट पॉइंट इज गिवन. Okay, every state was effectively a distinct market for the industry as well as a consumer. तो गुट्टे state रे तांकने business करी आगे they have to had a very complete and complicated idea about the different tax systems. आ कोडी को goods किनले तांको कम पड़ियो कोन पड़ियो सब जिंस तांको बारंबार कोन इंक्वायर करियो पड़तुला. बट GST परे कोन हला as we have seen interstate रो जो ट्रेड ता अछि सेटा टिके सिंप्लीफाइड हला. तो जो मो फर्स्ट बेनिफिट्स जो पढिली से तमे कोन भाबिबो डिफिकल्टीज लेखिला को ना जदी ए बेनिफिट न थाना तो पूर्व रे कोन हे थांता कि कोन हे थिला बुझी पालो. तो सेडा को रिवर्स करी कि लेखिबो सेडा तो एडा से जो यूनिफॉर्मिटी फैक्टर ता आसीबो जो डिफिकल्टी ना एडी दरकार. सेकंड पॉइंट लेखो फर्स्ट रे एवरी स्टेट वाज तमन को पॉइंट्स जणा अच्युत जोड़ा कहले ठीक अच्छे देवानंद जोड़ा कहले ठीक अच्छे बाकी कौन लिखिबो सेडी that should be practiced. Every state was effectively a distinct market for industry as well as consumers. 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 Next point go. About cascading effect.
difficulty. Pretty difficult होतिला somewhat here. Same point भितर को पड़ा आसला. Central government used to have. Okay, we'll see co point as आसची. कौन? हाँ, सेटा कैसे उल्टाड़ा पचारियो? एमिति तो से कहनी सेंट्रल गवर्नमेंट से तो एडमिट करिवनी ना कि कम ये अच्छी कहि कि सेमति किछि पॉइंट से कहनी से कहिछि कि कोन ना के कहला टैक्स ऑन टैक्स के कहला के कहनी तमे कहला बे तो से पॉइंट को रिलेटेड कोन थिला ना इन एडिशन देयर वाज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स एक्चुअली इट्स नॉट टैक्स इट्स रेट्स लॉ एंड प्रोसीजर दिस कॉस्ट हेवी कंप्लायंस बर्डन तो से कहनी टैक्स ऑन टैक्स कहि से गोटे टर्म डायरी यूज करछि कोन हेवी कंप्लायंस बर्डन सेटा लिखि परिबो heavy compliance burden due to multiplicity of rates, laws and procedures. Rates, laws and procedures. सेटा दीडा पॉइंट कर देछि serious issues due to imposition of tax on tax in fewer cases. से एडमिट करनी कि सब जगह सेटा थिला गई से ताकू से गाली कर परियोगी निजे निजे देन तमे कोन कहिथिला बिजनेस कष्ट होथिला ट्रेड कष्ट होथिला तो से रिलेटेड गुटे पॉइंट अछि कोन एज अ रिजल्ट लॉजिस्टिक सेक्टर्स माने बुझि पाछो बिजनेस रो आउट टर्मटा लॉजिस्टिक सेक्टर रिमेन इनएफिशिएंट एंड इज एडवर्सली अफेक्टेड and it adversely affected the businesses. Logistics माने कोन what is logistics? कोन नाइ प्राइस को जगह थोड़ी कम मिलेगा को जगह नॉर्मल लॉजिस्टिक्स तो बदल सुन रहे कौन कौन से देखो सारा लॉजिस्टिक्स रोई जा बाबा लॉजिस्टिक्स माने कोन सुनील लॉजिस्टिक्स माने कोन लॉजिस्टिक्स माने ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन से सब जिन सब को हम कहू लॉजिस्टिक्स कहि झगड़ा से कुछ कोडी कम रे मिलियो हां कोडी अच्छा लॉजिस्टिक्स ओके लॉजिस्टिक्स माने होची डिस्ट्रीब्यूशन से सब जिंस हैला ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन से सब जिंस को हम कहू लॉजिस्टिक्स कहि तो लॉजिस्टिक्स रे जेहेतु बहुत जिंस बहुत इनएफिशिएंट रहिला जीएसटी लागी तो सेडा कोन का ऊपर इंपैक्ट पकेला बिजनेसेस ऊपर इंपैक्ट पकेला दिस इज अनदर पॉइंट लेखा logistic sectors remained inefficient माने प्री जीएसटी रेजिम रे कोन remained inefficient which adversely affected the business आज से पिला केते धीरे बस खाली देखो केते अटेंटिव अछि केतेटा आंसर से कहलानी सेडा मते देखो नहीं से कथा म करे से वो अकेला ही ठीक है तार कोन टिके हबो जीवन रे से दिडा पिला खराब पले मु कोनी तांकर ले इंडिविजुअली हल बट ऑगी एंड द कॉकरोचेस टाइप रो एडी ऑगी होची बट आई डोंट हैव अ बड़े भैया हाँ
बड़े भैया का एक पॉपुलर सॉन्ग था, हु रिमेम्बर्स इट? कौन? बड़े भैया गोटे गीत गाउथिला, मैं निकला गड्डी लेके, सेमती जाउथिया और गीता को डाकी दो आउथरे पुणी पळा आसियो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कुह। 3 नंबर टा मुद्रा बोल डायग्राम काम कोन? 3 नंबर टा मुद्रा बोल डायग्राम काम तमे कोन ना कहिथिला कि सब टैक्स यूनिफॉर्म रे आन देशर जाय। हां तमे बेनिफिट कहले मु कहली सेडा ना उल्टा आगा हबो कहि मु मना करनी तो। कुह जल्दी, 5टा पॉइंट हे लानी आ 3टा पॉइंट अछि, गेस करके कुह एमति मु लेखि देले तमे बुझियो नेले नै, बाकी ट्रेन योर ब्रेन। ठीक अछि पूरा क्लियर। नेक्स्ट से कहूँ कि इंडस्ट्रीज चॉइस ऑफ लोकेटिंग फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिवेलिंग टैक्स रेजिम हैला। जोडी ले इंडस्ट्री सेटअप करियो तांके डर थिले काहेंगी देखो से पॉइंट क्लिक हे गया अछि। वेरी गुड, गुटे गुटे स्टेट रे गुटे गुटे टैक्स सिस्टम जेहेतु चलथिला तो इंडस्ट्री सेटअप करियार तांको डिमांड थिले मध्य इंडस्ट्री सेटअप करियो तांके डर थिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। इंडस्ट्रीज चॉइस ऑफ industries choice of industries choice of locating factories or warehouses was heavily influenced by existing tax regime ओके 6 पॉइंट्स काफी काउ किछि डाउट अछि हस दउचो कोन ना से बाडेल तो हसछु खुशी गोटे देखो constitutional provisions, the power to levy taxes divided between the union and states, power to both center and states to legislate GST or interstate trade levied collected by the center shared with the states, defines GST and excludes liquor for human consumption। GST भितरे जदि गुटे जिंसो केबेल आसियो नेले कहले कोन liquor for human consumption, but liquor जो जिंसो अछि जो मेडिसिन बनायर जो liquor अछि that is under the purview of GST, but GST भितर जदि को जिंसो नै that is liquor for human consumption। आगे तो हम सब जगह फ्रेंड जीएसटी और वो सर्टिफाइड है ना तो सब ऊपर यार तो जीएसटी आसला तो सब जगह लगा लगा टैक्स। हां बट ए जिंसो ऊपर टैक्स जीएसटी पडुनी टोटली लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ना हैला जीएसटी पर्सपेक्टिव रो से एक्सक्लूडेड तारा कोन पढ़थियो से जा सब जेती पढ़थियो जीएसटी नै आले से कोन छाड़ दो की जीएसटी काउंसिल वेरी इंपोर्टेंट अलगरे टिके लिखि दियो बेटर हबो। जीएसटी काउंसिल रे क्वेश्चंस बहुत थरे आसुची आस्थिला फिर तमर एबे सेडा म देखिला ले लाउछ जे तमन कहियो ना मु तो बुढ़ी हेलिनी चापड़ा पकी दी बुढ़ी हेची बट विवाह हेनी ना तो कहि परियोनी
कौन कहले हाँ माने बुढ़ी ही पारिबो यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप हाँ पाला परे आंटीडेक दैट इज प्री जीएसटी रेजिम एंड आफ्टर पोस्ट जीएसटी रेजिम हाँ कौन अंकल सुनील अंकल बूढ़े बूढ़ा तो जीएसटी लेखा एड़ा ना कंपनीज एक्ट लेखा 2018 आज्ञा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री ना मो सेटा गोटे अलग जिंस सेमती सेड़ा से पचारे रे लेखो सेड़ी जीएसटी काउंसिल दा वेरी इंपोर्टेंट आज्ञा टोटल गोटे जीएसटी काउंसिल ना कौन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस आज्ञा ना 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 माने सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करथिबे हु इज रेलेवेंट देखो मनोर जीएसटी रे एमती किछि मैटर्स डिस्कस हेबा को चाहूची किबा देयर इज अ स्कोप दैट पर्टिकुलर मैटर्स विल बी डिस्कस्ड जो जिंस ऊपर गुटे पर्टिकुलर मिनिस्टर इज वेरी मच एफ्लुएंट माने से लोक बहुत भलो डिसीजन मेकिंग करि परियो सो इररेस्पेक्टिव ऑफ इन व्हिच कैडर ही सेंट्रल गवर्नमेंट सेडा कोन से स्कोप भीतर को आनी परियो बट नॉर्मल केस रे से कोन एति की लोकन रखिछि तो एजा सब कोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली पहले आम एटा लेखा यूज रे मेंबर्स एटा लेखा यूज बट आमे कोन रियलिटी रे कहि पारे कि ए लोक जा रहिए सीडीएल कहि रे जीएसटी काउंसिल रे कहि पारिबा कि हमको जनरली जीएसटी काउंसिल रे के लोचुनी ना फंक्शंस जो लेखा है हमरो ए जिंसडा जे फुलफिल करि पारिबो ओनली दोस पीपल विल एग्जिस्ट इन द जीएसटी काउंसिल कोन कहथिलो स्टेट रो डिपेंड करछ हाँ एग्जैक्टली आ तो को जिंसरो थ्रेशोल्ड लिमिट सली कहले एबे हमर वर्तमान को थ्रेशोल्ड लिमिट केते अछि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे कि जानछि सुनील केते अछि कोडा पे गुड्स ना सर्विसेज माने जो जो पर्टिकुलर लोक गुड्स जो सेल करछि जदि तार थ्रेशोल्ड माने एग्रीगेट लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर जो सेटा जदि 40 लाख हैला तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी तो से थ्रेशोल्ड लिमिट के फिक्स करियो जीएसटी काउंसिल फिक्स करे हाँ माने वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करि परियो बट गुड लेवल पर दैट इज मैंडेटरी तो व्हाट इज द जीएसटी काउंसिल से पाखरे लेखो टिके खाली लिखि देथो
जीएसटी काउंसिल रे जेतले वो स्टार्ट करिवे तो ए लाइन टा लिखि के स्टार्ट करिवो constitutional body responsible for constitutional body responsible for making making recommendations on making recommendations on making recommendations on GST in India. Making recommendations on GST in India. एटार कन्स्टिट्यूशन रो को प्रोविजन अंडर आछि सेटा टिके इंपोर्टेंट 279A हैला सेटा लिखि छि ना लिखिनि मु हां लिखि छि आर्टिकल 279A अंडर आछि जीएसटी काउंसिल आवर 279A chairperson किए रहबो डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा आछि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द chairperson of GST council members किए रहउछन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस एंड डिसीजन मेकिंग केमती होची ना 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स जोडा कहउछन सेडा आगा फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट रो केते परसेंटेज ऑफ वोट रहउची 1/3 स्टेट्स रो 2/3 कोन पे एमिति काहे स्टेट्स को अधिक प्रेफरेंस दियाइची एब्सोल्युटली स्टेट गवर्नमेंट रे जेहेतु अधिक लोक रहिबे अधिक मिनिस्टर्स इन्वॉल्व अछंदी अधिक लोक इन्वॉल्व अछंदी अधिक पर्सपेक्टिव्स रो डिस्कशन हबो दैट्स व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन more preference in the weightage of decision making of GST council quorum kete 50% of the members माने at least half लोक ने नथिले माने half of the total members नथिले GST council रे मीटिंग आगा स्टार्ट हबो functions कोन recommends rates exemptions threshold limits inclusion of petroleum etc माने जो फैक्टर्स जदी इंक्लूड कर अछि एक्सक्लूड करियर अछि एटा त म एग्जांपल बेसिस रे दे दिछि मो फंक्शंस तोड़ लिखेबी को ईयर आस्थिला एटा 2022 December 7 marks question functions of GST council मु लिखेबी से तळे ग लिखे दोछि functions of 7 marks 2022 December functions of GST council functions of GST council we have 5 most important functions number 1 is GST council is to make recommendations to the central government and the state government लेखन मु कहूच central government और state government को but को जिंस को धरि किनी ना फर्स्ट होची tax rates number 2 is exemptions tax rates exemptions 3 is threshold limits dispute resolution and GST legislation including rules and notifications GST legislation including rules and notifications चार्जर टा पड़ी अछि टिके आन लैपटॉप
ଜାଣିଛ ଭିତରେ ଥିବ ଟିକେ ଆଣି ଦଉଛି। ସେଇଟା ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ କନେକ୍ଟ କର। Thank you. 2024 2024 December 7 marks question again on GST Council. It's who are the members of GST Council? State any 5 recommendations that can be made by the GST Council. The combined वाला question रहेगा से पाखरे लिखी दो आंसर तो ऑलरेडी अच्छी तम पाखरे la question is who are the members of GST Council? State any 5 एडागा लिखिबो टोटली ऊपर जोड़ा अछि state any 5 recommendations that can be made by the GST Council. That can be made by the GST. That can be made by the GST Council. Next, the concept of GST, value-added tax on manufacture, sale and consumption of goods or services. Continuous input tax credit chain, only value addition tax. Destination based tax, this is important. Final consumer bears the burden. Destination based tax माने कौन? Only the final consumer will bear the tax burden. माने जे consume कला सी tax माने payment कला. Dual GST structure is एडार मीनिंग होची कोन खाली ए दिटा पॉइंट टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार परियो बाकी दिटा किछ दरकार नै. Dual GST structure is CGST, SGST, UTGST माने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, IGST माने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस. Framework of GST देखा seamless flow of credit between center and states. GST common portal www.gst.gov.in managed by the GSTN. GSTN is Goods and Service Tax Network. Functions of GSTN एडा भी गुटे important part ना मैं पढ़िबा. Question हाँ आसीची 2022 December 7 marks question. Functions of GSTN एडा लिखि दे पारिबो मो तळे देइछे. ओके फाइन मु लिखि दोछ. लिखि दियो एडी question टा. Functions of GSTN and its functions. GSTN and its functions 7 marks. खाली GSTN कौन भी क्वेश्चन आसीची 7 टोटल मार्क्स पे 7 मार्क्स पे आसीची तो दीडा जा जिनस मु लिखि दोची एडी. GSTN एडा GSTN stands for Goods and Service Tax Network. Goods and Service Tax Network. Service Tax Network. Goods and Service Tax Network, which provides
IT backbone, which provides IT backbone for the GST system, for the GST system in India. GST system in India. Functions ର first point होची registration, return filing, tax payment, invoice matching, information sharing, analytics and management information system, security and confidentiality, ହେଲା ଏତିକି ରହିଲା ତାର functions। 2023 December question actually explain the benefits of GST to business and industry, number 1, to central and state governments, number 2, 7 marks question आसुची 2023 December benefits of GST, this one। अच्छा एडा हमें देखि देबा फर्स्ट कंपनसेशन फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी तो देखिलो हमें कंपनसेशन सेस कोन इट्स नॉट एक्चुअली दैट इंपोर्टेंट बाकी अच्छा लिखुचो एडा लिखि सारला ना लिखि सारचो कंपनसेशन सेस माने कोन लेविड टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस ड्यू टू जीएसटी एप्लीकेबल ऑन खाली एडा गुट्टे जिंस टिके देखो बिट क्वेश्चन पर्पस पे इंपोर्टेंट कंपनसेशन सेस इज एप्लीकेबल ऑन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स ए जा हो जेसरा डीमेरिट और सिन गुड्स ए जा सब टोबैको पान मसाला एगुड़ा सब लग्जरी कार्स ए लोक जो लग्जरी कार्स की फॉर्च्यूनर व्हाटएवर दे आर बाइंग सेमन ऊपर जदी किछि टैक्स पक्की दोछ तो से माने गरीब होई जिन हैला तो जीएसटी को जदी किछि लॉस हैला रेवेन्यू रो किछि लॉस हैला जदी काउंसिल को स्टेट्स को सो से माने कोड रो डिराइव कर दोछन मोटा मोटा सुना चेन पिंधिया वाला गरीब लोक पाखरे से माने कोन करचंदी डिराइव कर दोछन कि फॉर्च्यूनर किनुथिबा गरीब लोक पाखरे मनर गोटे लोक रिक्शा रे जाई फॉर्च्यूनर किनला हेले हेले साडू कोन कंपनसेशन से स्ने होचंदिया हैला बुझी पाला ना नहीं तो लग्जरी गुड्स इन गुड्स गुट लोक टोबैको ऊपर डेली डेली पडुची टोबैको काजेस कैंसर कोन कोन बोलछु फॉर्च्यूनर लग्जरी कार अंडर जाउनी मो एग्जांपल दे देले मो एक्चुअली जानि लग्जरी कार अंडर कोन जाउची रोल्स रॉयस जाउची ओके देन मॉरिस गैरेज जाउची जाउनी आओ फॉर्च्यूनर जाउची आओ कोन कहलो ए बोर्ड रोल्स रॉयस आर आर जोड़ा हां सेटा देखिछि आ बाकी
लैम्बोर्गिनी ओके एडा एला ना सुन ऑडी ऑडी ऊपर ले जाओनी ऑडी भी लग्जरी कार अंडर रे जाछ ऑडी लग्जरी अंडर होनी हो छाड़ो लग्जरी कार मो जमा मते आईडिया नहीं व्हाटएवर एबे मो कई नैनो किनिया वाला जदी कहियो कोन मो कार लग्जरी नहीं तो पारे कार अछि ना तो डेली चली जाउछ मु देखिछि कहि दले देखे कार किनले गुट्टे गुट्टे कैब बुक करवले डेली गुट्टे गुट्टे कार सेत पे मु किननी मोले कोई तो लग्जरी गुड्स को लग्जरी कार्स और डीमेरिट गुड्स ऊपर जहाँ भी माने रेवेन्यू रो लॉस हेइथिबो जीएसटी रो तो तांकानी कंपनसेट करिया पे दे लेवी समथिंग ऑन दैट एंड डिराइव द इनकम एंड कंपनसेट द लॉस, so that's why it is known as compensation cess. For first 5 years of GST implementation initially planned 2017 to 22 हला तो एटा किछि एते रेलेवेंट नै खाली एति कि जिंस टिके जानो कि को जिंस ऊपर लागू होउथिला कंपनसेशन सेस बिट क्वेश्चन पर्पस पे गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड जीएसटी कोन पेट्रोलियम क्रूड एचएसडी मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो तमे गुटे जिंस बुझ जो गुड्स पई जदी अलगा रे गुटे एक्ट आगा हेछि टैक्स सिस्टम टा कैलकुलेट करिया पई तो से जिंस केबे हेले कोन जीएसटी अंडर आसियोनी जदी घर बिकुचंदी ता ऊपर गुडा टैक्स पड़िबो बहुत प्रकार जिनस अच्छी बहुत प्रकार टैक्स अच्छी सेथरे से घर को नेचर सेडा जानिया पड़ो सेडा कोन बिनामी ट्रांजैक्शन अंडर आसी ना नॉर्मल गुड्स अंडर आसुची को घरडा बिकुचो का बिहाफ रे बिकुचो एनआरआई जदी बिकले अलगा टैक्स इंडियन पीपल बिकले अलगा टैक्स केते दिन रिटेन करछो ताकू धरि के अलगा टैक्स तो दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स विल नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी टैक्स सब्ज्यूम्ड एडा टिके इंपोर्टेंट देखो को टैक्स मिसी एच जीएसटी अंडर रे एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वाट सीएसटी सीवीडी ऑक्ट्रॉय लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज बिट क्वेश्चन रे पछले पछारिबो हैला देखियो पड़ियो कौन कौन सब मिसी बहुत प्रकार टैक्स अच्छी ना देखिए सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन कहले सेटा जीएसटी अंडर रे मिसी जाइछ सीबीडी I think so. Countervailing duties CBD माने countervailing duties एटा ग्लोबल ट्रेड ऊपर पड़थिला लागू होथिला आ गुटे कोन थिला एबे वर्तमान को अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऊपर वाट पड़ुची एंड एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल डीजल एंड एविएशन फ्यूल तो एटा मध्ये लिखि दियो मुना रही रही मेहंदी आर्टिस्ट के मात्र आउनी मत छुट्टी पके रो मेहंदी नो हैंड राइटिंग तो सीन दियो मु जाननी बाबा पढ़थियो आ जीएसटी अंडर रे नाइ हली गले ताको हाउ जेते दरकार सेते पकोथियो
एक्चुअली जीएसटी अंडर जदि अल्कोहल था से कंपनसेशन से ता ऊपर पकई दे था मधु तो मधु केते चार्ज कले कौन किए कहला एबे जे आईनी तो जीएसटी जीएसटी अंडर सेटा केबे आइयोनी से फर्स्ट रु एक्सक्लूड कर देछ सेटा केबे ले आसी परियोनी ए दीटा जिनस ऊपर केबे ले आसीबनी पेट्रोल डीजल एंड एविएशन फ्यूल हाँ से जा सब पड़ियो petroleum products like petrol diesel and aviation fuel AVIATION benefits of GST देखो अच्छा एडा काउ डाउट अच्छी कि इतनी की जो लिखिली एजा तो फुल फॉर्म जा जीएसटीएन बुझिला कौन करिवो एंड आउ गोटे जिंस जीएसटीएन एंड जीएसटी काउंसिल मध्य कंफ्यूज हबनी केबे हैला benefits of GST देखो boosts make in India and reduces cost of production increases government revenue eliminates double taxation creates unified national market mitigates cascading effect केते जिंस बेनिफिट्स हेले बहुत जिंस तमे निजे निजे कहि दो आज्ञा 3 of 5 रे eliminates double taxation and it mitigates cascading effect mitigates माने it reduces but एटा totally eliminate करछ बुझी पारना नै किछि किछि पोर्शन रे एलिमिनेट करछ बट किछि पोर्शन रे 2-3 टैक्स त लागिरा लागुची आगे जिमती हेले बुझी पारना नै ना बुझले नै आ कोन लाज करछ हां क्वेश्चन टा टिके लिखि दिया लास्ट क्वेश्चन कोन अजित कोन कहल explain the benefits of develop of business and industry number 1 central and state governments central and state governments सेटा चारटा एडा चारटा पॉइंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे कौन इजी कंप्लायंस then uniformity uniformity of tax structure improved competition gain to manufacturers
Gain to manufacturers and exporters. Simple and easy to administer. Simple and easy to administer. High revenue efficiency. Gain to manufacture and Exporters. High revenue efficiency. Better control. Boosting Make in India initiatives. বুঝলা? সেটা আউট সে দিডারে। No doubts? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।